We have begun to raise our daughters more like sons, but few have the courage to raise our sons more like daughters. On behalf of Hindu Kanya College Kapurthala, I, Varinder Kaur, from Department of Political Science, welcome you all in today's webinar on the topic Gender Sensitization, time to Change the Mindset. With great pride, I welcome our today's resource person, Dr. Ritu Lehal, Professor, School of Applied Management, Punjabi University, Patiala. We are thankful to you, ma'am, for gracing this session. I also welcome respected Principal Ma'am, Dr. Archana Garg, whose unflinching moral support and exceptional perception inspired us to organize this webinar. I also feel privileged to welcome all the teachers, scholars, students who have joined this informative session. Gender sensitization simply means feeling of empathy for opposite gender. When we simply talk about the biological differences between male and female, we are talking in terms of sex. But when we talk with reference to the social, cultural, and economic status of both, we talk in terms of gender. Women in India still suffer from gender inequality because of the lack of gender sensitization on part of males. Many of us blame that degradation of values and ethics amongst the youth is the root cause of problems like e-teasing, rape, domestic violence, and many more. The blunt truth is, whatever has percolated in young minds has finally been ingrained in them by social cultural environment, which mainly includes their family, school, and peer group. The major responsibility for developing gender sensitization rests on the shoulders of family members and educators. To share enlightening views on such a sensitive topic, we have amongst us Dr. Ritu Lehal, Professor, School of Applied Management, Punjabi University, Patiala. Dr. Ritu Lehal is MCom, MPhil, PhD, and had 30 years of teaching experience. She worked twice as head University School of Applied Management, Punjabi University, Patiala. Moreover, ma'am is the director of Women's Study Center at Punjabi University. She has also been appointed as nodal officer for Unnat Bharat Abhiyan Cell of Punjabi University. Dr. Ritu is also the member of Anti-Sexual Harassment Cell of Punjabi University. Besides these accomplishments, she is working as the secretary of Women's Club of Punjabi University, Patiala, and also performing the role of Dean Faculty since July 2020. 16 students have completed their PhD and 5 students have registered themselves for PhD work under her able guidance. More than 50 research papers have been published in various research journals like Business Analyst, Social Asian Journal of Management, and Business Vision, etc. Dr. Ritu has also completed various research projects successfully funded by UGC and AICTE. She has also completed 4 research projects of Women's Study Center and projects of Punjabi University Patiala as principal investigator. Her ongoing research projects are major research project on enhancing reproductive health of rural women through awareness program funded by ICSSR and minor research project on Fulkari, reviving and sustaining the traditional handicraft of Punjab funded by Center of Women Development Studies, New Delhi. Ma'am Ritu has organized various international and national seminars and workshops. She has also acted as a resource person and delivered various lectures related to the topic of gender sensitization at various colleges, university, Akashvani Doordarshan Patiala, and also at Fanshawe College, Canada. Indeed, Professor Ritu Lehal is an excellence personified and her credentials are exceptionally remarkable. Ma'am, may I now request to you to deliver your views on today's topic, that is gender sensitization, time to change the mindset. Ma'am Ritu, please. Thank you, Varinder ji. Principal of the college, Dr. Archana Garg, colleagues from the college, and dear students. In fact, we have been arranging some workshops on gender sensitization since last 6-7 years.
And as such, as when I joined as director of Women's Study Center, before that we had started involving myself in women-related issues, because the Women's Study Center was established around 10, 11 years in Punjabi University, and since then I'm engaged in women-related activities, directly or indirectly. But six and a half year back, I took over as director of Women's Study Center, and so since then we started with the organizing some workshops for different, you can say, groups. Like for students, we have arranged till now more than 60 workshops, 10 for Punjab Police and Chandigarh Police. Then for other departments also, like uh, All India Radio, then the bank employees, then electricity board people, and so many other. So our main purpose is to sensitize people about gender issues. So many times we have a little bit of doubt about what is gender equality, how it can be achieved, and so many times we are not clear about some groups. They are not clear about what is gender discrimination, what is gender inequality. So many times we take it as a rule, general rule ki this is gender equality, and that gender equality which we define normally, that also has some problems. Because when I talk to students that what is gender equality, and how do we define it, and why do we need gender sensitization programs, then normally they are not able to answer, because most of the time students, when especially this is a girls college, I assume, but when they study together in co-educational type of system, normally they cross their boundaries uh, within educational institution. But for even for girls college, you come across so many problems which lead to gender inequality, gender discrimination. When you travel to your college, when you travel in uh, public transport, or auto rickshaw, then buses, and so many other such things, then you come across so many eve teasing problem, then commenting from other gender, and touching, then staring, then stalking, so many such problems which you come across in your normal routine. So whether it's a girls college or a co-educational college, I think everybody should be sensitized about gender issues. They should be clear about that this thing is not acceptable. After this limit, I will not accept something which is objectionable. If I say no, then it should be taken as no. So I think every female, every girl student should learn that assertiveness. So I hope this language will be suitable to majority of the students. Yes, ma'am. Brinderji? Yes, ma'am. But you can use mixed language also, either in Okay, Hindi. okay. I can use a mixed language also, so that maximum can understand easily. So, purpose of gender sensitization workshops, I have already made clear that when actually it starts from family, then society, then educational institutions, then your jobs, everywhere you feel gender discrimination is there. Why so much gender discrimination in our society? There are certain factors, and first factor, very important factor, is patriarchal society. Patriarchal society means male dominant society, where maximum decisions are taken by males for themselves and for females also. Now, some decisions are taken by father for a daughter, then by husband for wife, then by son for mother. So this way, throughout the life, a lady will never be independent in decision making.
in all other kind of activities. Whether you are going out to attend a function, somebody would accompany you from your family. कोई ना कोई साथ में जरूर आएगा, भाई आ जाएगा या फादर आपकी. I mean, so many people are worried about your safety and security. That is basically the issue. And इसलिए they will send somebody with you when you uh, when you cross the boundary of your warm home. So, first factor which is responsible is patriarchal society, and this patriarchal society has many negative effect on our personality, many negative effect on our careers, many negative effect on our whole life as such. So, second is lack of awareness. So this is something which is related with the personality of girls and females. So many times we people lack that these are our rights. We don't know that these are my rights. And that's why I will not raise my voice in if something goes against my rights. I will keep quiet because in my family शुरू से मुझे ये सिखाया जाता है डेफिनेशन ऑफ गुड गर्ल एंड बैड गर्ल. जो गुड गर्ल्स हैं वो डोसाइल हैं, वो बोलती नहीं है, सिर झुका के बात करेंगी और आगे से जवाब नहीं देंगी, आर्ग्यू नहीं करेंगी, अच्छी वाइफ बनेंगी, अच्छी मदर बनेंगी. उस अच्छेपन की डेफिनेशन जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी के हिसाब से डिफाइन हो गई. सो दैट मीन्स अब आप लोग फिट होना चाहते हो उस अच्छेपन में. दैट इज द बेसिकली प्रॉब्लम, क्योंकि वो अच्छे होने की क्वालिटी भी डिफाइन की है मेल्स ने अपनी सहूलियत के हिसाब से. सो हमें लगता है कि अगर मैं आर्ग्यू करूंगी, अपने राइट्स के बारे में बोलूंगी, अगर मैं अवेयर हो जाऊंगी तो शायद लोग मुझे एक अच्छी फीमेल ना समझें. सो उनकी उस कैटेगरी में ऐड होने के लिए I will keep on making adjustments. I will make so many compromises as a mother, as a professional female, or as a daughter, as a wife. I will keep on doing adjustments, or I will try to fit myself in the category of good girls, good females. So, and for that I need जो awareness की जरूरत है उसको भी मैं कहीं ना कहीं पीछे कर दूंगी कि नहीं, if I become aware of my rights, so it will come in contradiction with my role of a good female. Okay, so that is basically एक dilemma है जिसमें से आपको निकलना है. So कि आप अपने लिए अपनी डेफिनेशंस खुद क्रिएट करो कि ये अच्छा है मेरे लिए, ये खराब है. सोसाइटी तो खुद ही साथ साथ एक्सेप्ट कर लेगी. It will take time, but change will come, and definitely change is coming also, although with a very slow speed. But don't worry, कोई ना कोई तो change लाएगा ना, तभी change आएगी. अगर हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें कि change शायद कोई और लाएगा, मेरे करने के लिए तो कुछ नहीं है. So in that case, I think कि कहीं ना कहीं मेरी खुद की भी प्रॉब्लम है. अगर मैं अपनी अवेयरनेस थोड़ी इंक्रीज करूं, लेवल अवेयरनेस का, मेरे क्या राइट्स हैं, क्या लीगल राइट्स हैं, क्या सोशल राइट्स हैं, या जुडिशरी मुझे कैसे हेल्प करेगी, तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी अवेयर होंगी और बाकियों को भी अवेयर करूंगी. दिस इज अनदर फैक्टर. देन वन मोर फैक्टर इज इलिटरेसी एंड पॉवर्टी. All these factors jointly are responsible for gender discrimination. Although we have equal education rights given to females and males in our country as per law, but even in my university, more than 65% are girls. किसी भी institution में आप जाओ, number of girls will be more than boys आजकल, especially co-education में. In our university, we have 9-10 girls hostels and only 3 boys hostels. This is the actual position. But if I talk about
any position given to ladies or females. In all the 3 universities of Punjab, there was only one female vice chancellor, that too in Punjabi University, and that too in early 70s. So now we can see कि leadership position पे females कहाँ आ रही हैं या उनकी क्या कितनी weak position है, that we can see. GND यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में आज तक एक भी फीमेल वाइस चांसलर नहीं हुई आज तक, बिकॉज अगर हम देखें पिछले 3-4 डेकेड से फीमेल्स के लिए ये प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन इज द मोस्ट फेवरेट प्रोफेशन. पर टीचिंग में भी आप कहाँ जा रहे हो, मैनेजरियल पोजीशन पे तो आप कहीं हो ही नहीं. आप कहाँ पे हो? उन जॉब्स पे जो कंफर्टेबली आई कैन डू, कंफर्टेबली जो मेरे लिए मेंशन्ड है. लीडरशिप वाली पोस्ट के लिए नॉर्मली दे आर इग्नोर्ड. सो ये एक अनदर प्रॉब्लम है. पुअर लॉ एंड ऑर्डर इज more responsible for gender discrimination in our country. If I say that we have very many good acts and laws meant for females, meant for the safety and security of females, but the data of National Crime Record Bureau says that every 15 minutes a woman is being raped in India. And every 1 hour, there are more than 25 cases of crime against women. And that too, when 99% cases go unreported. So we are talking only about reported cases. Because data में तो वही cases आएंगे जो reported है. And what about unreported cases? And why cases are unreported? क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा फैमिली सिस्टम इसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है. इसलिए आर सिस्टम या गर्ल्स जो हैं वो रिपोर्ट नहीं करती केसेस को, फैमिलीज रिपोर्ट नहीं करती. क्योंकि जब भी किसी लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं उसको पहले तो फैमिली ही रेडी नहीं होती कि कंप्लेंट लिखवाई जाए. उसके बाद सपोज यू गो टू अ पुलिस स्टेशन, तो दे विल ऑल्सो डिस्करेज यू अ लॉट कि कंप्लेंट ना ही लिखी जाए तो अच्छा है. और उसके बाद फैमिली की रेपुटेशन, फैमिली इमेज, सो मेनी थिंग्स आर एट स्टेक बाय द फैमिली. कितनी कम फैमिलीज हैं जो ऐसी कंप्लेंट्स में लड़की के साथ खड़ी होंगी, वेरी लेस. और हम लोग what we start doing, we start blaming that girl for any such incident. सबसे पहले फैमिली के पास अगर जाके वो कंप्लेंट करेगी तो फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन है तूने ही कुछ गलत किया होगा. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन. सो सबसे पहले तो उसको हम पिन पॉइंट करेंगे, इसी ने कुछ गलत किया होगा, इसी ने ड्रेस ऐसी डाली होगी, इसी का जेस्चर ऐसा होगा कि दूसरे किसी ने इसको छेड़ा या कोई और harassment की एक्टिविटी की. So that is basically our problem कि जो एक्यूज है, जो विक्टिम है, हम उसी को एक्यूज करते हैं कि ये उसी की गलती है. That's why unreported cases are there. Unreported इतने ज्यादा केसेस हैं कि हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते क्योंकि डाटे में तो वही आते हैं जो रिपोर्ट हुए हैं. सो ये सारा situation है poor law and order and judiciary system. Even if the case goes to the court, then how many years they take to decide a case in Indian context, that we can see. Itna, and again they will ask same questions to the girl that she will get badly discouraged. So poor law and order, poor implementation of laws and स्लो जुडिशरी सिस्टम, ये सब मिलके भी सेफ्टी सिक्योरिटी पे दे विल पुट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. एंड देन अनदर इज जनरल एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी एंड फैमिलीज. सो दिस इज ऑलमोस्ट सेम व्हाट आई वाज डिस्कसिंग. जनरल एटीट्यूड इज वेरी डिस्करेजिंग, whether from society, whether from families, whether from parents. Generally they try to disbelieve the girl.
कि जो ये बोल रही है ये तो ऐसी गलत होगा. So normally our family support is needed at so many times, especially जब कोई ऐसा इंसिडेंट किसी लड़की के साथ हो जाए, तो मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है. उल्टा फैमिली कम सपोर्ट करती है, सोसाइटी कम सपोर्ट करती है, जिससे कि वो ट्रॉमा में या डिप्रेशन में चली जाती है और फिर वो चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं. सो एक रीज़न तो ये है. देन वी हैव सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. ये भी डिस्करेजमेंट की एक अच्छा रीज़न है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. फर्स्ट टाइम it was defined in Indian context in 97 after Vishakha guideline was issued कि what will come under sexual harassment. 97 में जाके we people tried to define it. हालांकि उससे पहले भी तो फीमेल वर्क प्लेस उनके थे जिन पे काम कर रही थी वो, बट nobody bothered for that. So उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि क्या कुछ आएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट में, जिसमें नॉर्मली आएगा आपका टचिंग, देन स्टॉकिंग, देन स्टेयरिंग, देन शोइंग पॉर्न वीडियो, आस्किंग फॉर सेक्सुअल एडवांसेस या सेक्स रिलेटेड जोक्स शेयर करने. सो ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट. And it's not only physical harassment, it's mental harassment also. And for that, although Supreme Court has made it mandatory to have ICC internal complaint committees in various organizations where females are also there, but उसकी constitution भी fixed है और उसका सारा कुछ mandatory है. But even then, how many girls will come up to file their complaints in ICCs also? Even in university kind of structure, when I ask the girls that how many of you are aware, then normally just more than less than 1% girls. क्योंकि हालांकि बोर्ड्स लगे हुए हैं जगह जगह जिन पे कमेटी के मेंबर्स के फोन नंबर हैं, नाम है, सारा कुछ है, बट इवन देन स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ दीज इश्यूज. सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपनी सेफ्टी के लिए उनको खुद भी थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि ये मेरा सेफ्टी इशू है, इसमें मुझे अवेयर होना है, कॉन्शियस होना है, क्या कुछ मेरे लेवल पे रिक्वायर्ड है. सो नॉर्मली गर्ल्स दे टेक इट सो लाइटली. देन अनदर इज just celebrating Women Day on a particular day, or just celebrating Girl Child Day, and all these days for just simply one day, it's not sufficient. I think we will have to bring the change in mindset of the people. Mindset change will not come overnight. Rather, it will move at a very slow pace, because इट्स नॉट पॉसिबल कि जो जनरेशन से एक वैल्यू सिस्टम इनकलकेट हो गया पर्सनैलिटी में, दैट विल चेंज ओवरनाइट. इट्स नॉट पॉसिबल. इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम. स्टिल इट विल टेक मैनी ईयर्स टू चेंज, बट एट लीस्ट वी शुड स्टार्ट द चेंज. एंड फ्रॉम टुडे ओनली, या जब भी आपको कुछ गलत लगे तभी से चेंज शुरू होनी चाहिए. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि in public girls are not safe, in public transports they are not safe, and in at workplaces they are not safe. But अब एक और क्राइम इसके साथ ऐड हो गया आफ्टर कोरोना, that was domestic violence. And domestic violence was given the name by UN as shadow pandemic. I mean main pandemic and after effect of that pandemic. When husband and wife they started living together without going out, then अलग तरह का वायलेंस शुरू हो गई, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस. और ये सिर्फ इंडिया में ही शुरू नहीं हुई, सारे वर्ल्ड में. सो लास्ट मार्च से लेके मई तक नेशनल कमीशन फॉर विमेन रिसीव्ड more than 1,477 cases of domestic violence.
and out of these, more than 50% were received on WhatsApp helpline numbers. And these cases have increased. And one more aspect which is related to student, I would like to add कि online learning took its place instead of offline learning after pandemic and during pandemic. उसमें भी जो लेडी टीचर्स हैं, दे कंप्लेन्ड मी एज हेड कि मैम हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन प्रॉब्लम्स जो क्रिएट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन में जो टीचर को एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो सारे बॉयज हैं. सो जेंडर इशू ऑनलाइन लर्निंग में भी उतना ही है, क्योंकि जो एक बार एक मसला आया कि टीचर को चैटिंग में कोई स्टूडेंट एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा था, तो वो भी एक मेल बच्चा था, आई मीन मेल स्टूडेंट था. इवन घरों में जब मोबाइल के थ्रू क्लासेस लगनी थी, तब भी जेंडर इनइक्वालिटी सामने आई कि जो बेस्ट फैसिलिटीज हैं घर पे वो हम देंगे अपने सन्स को. अगर उसके बाद मोबाइल है अवेलेबल तो गर्ल को मिलेगा, अदरवाइज नहीं. सो अगेन जेंडर इनइक्वालिटी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई कि व्हेन इट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन, उस टाइम मानसा की एक लड़की थी, स्टूडेंट थी स्कूल की, जिसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो इतना डिप्रेशन में चली गई कि बाकी सारी क्लास आगे निकल गई है, मैं पीछे रह गई हूँ. सो इस तरह की कई प्रॉब्लम आई, कुछ लाइमलाइट में आई, कुछ न्यूज़पेपर में आई, कुछ नहीं आई. बट क्राइम जो है, अर्लियर वी वर सेइंग कि क्राइम रेट इज वेरी हाई in public places, in workplaces, and while traveling in public transport. But now you can see, जिस घर को we people were thinking कि it's very safe for the females, वो भी सेफ नहीं निकला. तो फिर सेफ्टी है कहाँ? इसी को सोचने की जरूरत है कि सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करेंगे हम फीमेल्स को. फीमेल्स, those who are constituting 50% of our population, 50% पॉपुलेशन अगर सेफ नहीं है तो कहाँ है सेफ्टी जो हम प्रोवाइड करेंगे? कैसे वो ठीक से अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर सकेंगी? कैसे वो अपने आप को एक अगर आप एक लेडी अच्छी एजुकेटेड है, अवेयर है, तो वो कितनी फैमिलीज को एजुकेट करेगी? तो कैसे कर सकेगी अगर हम उसके लिए एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं कर सकेंगे? सो कहीं ना कहीं आई थिंक इस पे सोचने की जरूरत है कि कैसे गर्ल्स को हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, या कैसे उनको एक अच्छा कॉर्डियल एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करें ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए. सो आई विल जस्ट गो थ्रू सम सॉल्यूशंस क्विकली. उसके बाद we'll open the house for discussion and interaction. Okay. From my side, there are certain solutions to this problem. Very first is कि whenever you travel through maybe public transport or otherwise, girls should keep helpline numbers with them. Police helpline number, any other helpline number, अब तो apps बन गई हैं. सो 1091 है पुलिस हेल्पलाइन नंबर. गर्ल्स थोड़ी अवेयरनेस लेवल अपना इंक्रीज करो ताकि हेल्पलाइन नंबर्स क्या है, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो किस नंबर पे कॉल करना है, कौन सी ऐप यूज करनी है. शक्ति ऐप है पुलिस की जो हर लड़की को डाउनलोड करनी चाहिए, और ताकि इन केस ऑफ एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट यू कैन डील विद इट, या कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए आ सके. सो सबसे पहले तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सर्टन हेल्पलाइन नंबर. अगर आप कैब में ट्रेवल कर रहे हो तो उसका नंबर शेयर करो अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड्स से, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप
उनके पास आपके कैब का नंबर हो, आप कैसे आ रहे हो पूरी इंफॉर्मेशन हो, और समथिंग लाइक दैट. एंड सेकेंडली आई वुड request all the girls and even boys are not there, so girls try to raise voice for other girls also. अगर आप if you are traveling in a public transport, आपके buses में आप travel करते हो, I have seen कि जो साथ में मेल बैठा है, चाहे वो 10 साल का है, चाहे वो 15 का है या 80 साल का है, he would try to touch the girl, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, वो कहीं न कहीं हरास करने की अपनी जो मेंटालिटी है ना, उसको भूलेगा नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं, बसेस में हम लोग ऐसे इंसिडेंट अपने सामने होते देखते हैं, बट हम लोग वॉइस रेज़ नहीं करते. हमें लगता है ये उसका मसला है, तो वो खुद डील करे उससे. तो अगर एक लड़की भी उसकी सपोर्ट में खड़ी हो जाए, तो मुझे लगता है 50% केसेस ऐसे छोटे-मोटे केसेस तो अपने आप खत्म हो जाएँ. सो मुझे लगता है बॉयज़ को भी थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है. ये ना सोचें कि ये लड़की के साथ मसला होता है. आपकी सिस्टर्स भी ट्रैवल करती हैं, आपकी मदर्स भी ट्रैवल करती हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है. थोड़ा-सा कंसर्न्ड फील करो, तो उसमें ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. आधी प्रॉब्लम तो उससे ही कम हो जाएगी. देन वी हैव अ share the incident with relevant people. You can trust your teacher, you can trust your friends, your colleagues. If any such untoward incident हो जाता है, unfortunately, तो ट्राई करो कि किसी ना किसी के साथ शेयर करो. कोई तो आपके साथ स्टैंड लेगा, कोई तो आपको एनकरेज करेगा कि आप इसके लिए पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ. आपके साथ चलने के लिए कोई तो रेडी होगा ना. तो बेटर है कि आप इस तरह का इंसिडेंट जो है उसको ज़रूर रिपोर्ट करो, ज़रूर वो किसी के साथ शेयर करो. शेयरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है छोटी लड़कियों में. छोटी बच्चियाँ जिनके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो उनको नॉर्मली डरा-धमका के जो है क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो उनको डरा के इतना डरा देते हैं कि वो किसी के साथ इंसिडेंट शेयर ही नहीं कर सकती हैं. सो नॉर्मली आई थिंक कि फैमिली लेवल पे थोड़ा-सा बच्चों को कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है, या बैड टच, गुड टच. ऑल्दो गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ स्कीम्स शुरू की हैं, बट कॉलेज लेवल पे भी ज़रूरी है कि गर्ल्स को पूरी ट्रेनिंग की दी जाए कि आपके साथ अगर कोई ऐसा बिहेव करता है तो आपने कहाँ रिपोर्टिंग करनी है, आपने अपनी मदर के साथ शेयर करनी है या टीचर के साथ शेयर करना है. सो दैट इज़ आल्सो मस्ट एट स्कूल लेवल, एट कॉलेज लेवल, इवन एट यूनिवर्सिटी लेवल. वहाँ पे भी बच्चे आजकल +2 के बाद आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि उनको एनकरेज या मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने उस इंसिडेंट को किसी ना किसी के साथ शेयर करना है. इसके बाद है कि वन थिंग आई थिंक इज नीडेड कि प्रॉपर अवेयरनेस रिलेटेड विद योर राइट्स एंड रिलेटेड विद लीगल राइट्स स्पेशली, कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट विद इन द इंस्टीट्यूट एंड बियॉन्ड द इंस्टीट्यूट, कि पुलिस में जाके कंप्लेंट कैसे करनी है, या अगर आप पुलिस में जा रहे हो या पुलिस इन्वॉल्व हो रही है तो एक फीमेल के क्या राइट्स हैं, उसको उसका केस डील करने के लिए आपको एक फीमेल पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है, या जो लीगल राइट्स मेरे क्या हैं, कब पुलिस आपको एक फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकती सनसेट के बाद, या उसको आप थाने में बिठा के नहीं रख सकते रात सारी, या कब तक. ये सारे रूल्स पढ़ने मुझे लगता है हर एक के लिए ज़रूरी हैं. एंड उसके बाद है सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी है या जो हमारे फैमिलीज़ हैं या एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, उसको चेंज होने में तो अभी टाइम लगेगा. लीगल सिस्टम को सपोर्टिव होने में टाइम लगेगा, बट तब तक
हम क्यों डिपेंडेंट रहें किसी और पे? अपने आप से सेल्फ डिफेंस सीखो। अपने आप से छोटे छोटे एक्शन जो आप सेल्फ डिफेंस में सीखोगे वो आपकी हेल्प करेंगे किसी भी इंसिडेंट को खुद डील करने में। सो गर्ल्स, मुझे लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पे दूसरों पे डिपेंडेंट होना छोड़ दो। आप सोचो कि आप घर का भी सारा काम कर रहे हो, आप बाहर का भी कर रहे हो, ये सेल्फ डिफेंस भी सीख लो, तो आप खुद से कम आप 4-5 चीज़ों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू डोंट बॉदर कि अ, आपकी इस तरह की सेल्फ डिपेंडेंट होने को लोग कैसे ले रहे हैं, डोंट बॉदर फॉर दैट। रादर ये एक प्लस पॉइंट है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाए तो आप बैठ के बेचारी बन के वेट ना करो। आप सोचो कि आप खुद से डील कर सकते हो ऐसे केसेस को। हम यूनिवर्सिटी में पंजाब पुलिस की हेल्प से या ताइक्वांडो कोच की हेल्प से वी हैड अरेंज्ड 3-4 वर्कशॉप्स फॉर गिविंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू गर्ल्स। आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर। आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी है, लड़कियों को खाना बनाना सिखाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उनको सेल्फ डिफेंस सिखाई जाए। खाना तो बनाना वो सीख ही लेंगी, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें हम नॉर्मली गर्ल्स को अलाउ नहीं करते हैं। सो एक तो सॉल्यूशन है ये सेल्फ डिफेंस अपनी खुद से करनी, लोगों की वेट नहीं करनी। कोई आपकी डिफेंस के लिए नहीं आएगा, वेट ना करो कि आपके राइट्स के लिए कोई और लड़ाई करेगा। चाहे वो फिजिकल डिफेंस है या मेंटल डिफेंस है, आपने खुद से इतना स्ट्रांग बनना है कि खुद अपनी डिफेंस खुद कर सको। ओके, सो देन वी हैव last but not the least is misusing of law should also be avoided। क्योंकि अगर एक दो लड़कियां भी मिसयूज करती हैं, that will result in spoiling the whole spirit of making laws for other sufferers। तो अगर एक दो मिसयूज करते हैं तो सब लोग सुनाने शुरू करते हैं कि देखो जी आजकल लड़कियां बड़ा लॉ का मिसयूज कर रही हैं। सो मिसयूजिंग तो हमारे सिस्टम के लूप होल की वजह से हो रही है, बट 2-4% अगर मिसयूज कर रही हैं तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट या इक्वालिटी की जरूरत नहीं है, बट जस्टिस तो 98% को भी चाहिए ना। अगर 1-2% उसको मिसयूज करेंगी तो बेसिकली मिसयूजिंग को जितना अवॉइड कर सको, क्योंकि दैट विल स्पॉइल द होल spirit of making laws in favor of females। So this is all about anything which you want to discuss. I think house is open for that, related with any gender issue. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for this knowledgeable and enlightening session. Now it's time to start our question answer session. The first question is, ma'am, what is the difference between gender equality, gender equity, and gender sensitization? Actually, all these three terms are interrelated. You can't separate these terms कि gender equality है या gender discrimination है। Actually, if you talk about sex and gender, तो sex तो हमारी एक physical है जो जेनेटिक है कि ये बॉयज हैं, दीज आर गर्ल्स। बट जेंडर जो है वो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, जेंडर के रोल्स क्रिएट किए हैं, जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट की है। और ये रोल जो हैं ये किसी बेस पे नहीं बने हैं, क्योंकि पुराने चले आ रहे थे। हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें हमने वैसे डिफाइन किया है कि ये ब्राह्मण है इसका ये काम है, ये वैश्य है इसका ये काम है। तो वो सब तो चेंज हो गया। अब हमारे माइंडसेट में से बाकी जेंडर रिलेटेड इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप भी तो निकालने की जरूरत है। सम टाइम वी फील कि जेंडर इक्वालिटी मींस दूसरे जेंडर को हम पहले डिग्रेड करेंगे तब जेंडर इक्वालिटी आएगी। नो, नथिंग लाइक दैट। हमने ऊपर कैसे जाना है, हमने सिर्फ ये देखना है। दूसरा ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बाद की बात है। सो आप ठीक तरह से चल रहे हो या नहीं ये हमने देखना है बेसिकली। सो
more or less gender discrimination, gender inequality, or all these women empowerment are interrelated. Thank you, ma'am. Our next question is gender equality is a major concern for males too in this male-dominating society? Sorry? Is gender equality is a major concern for males too, male persons in this male-dominating society? Bilkul. Gender equality can never be achieved without the help of males. So basically, we are mistaken. A few years back, UN's slogan on Women Day was "He for She." Until and unless we don't involve males in gender sensitization and gender equality, that is not possible. Because so many times when I talk to boys in groups, even they are not aware that they are doing something wrong. They are doing something wrong to their sisters, their mothers, and especially when they use abusive language. So gender equality, I think it's possible only and only if we involve males also. जब तक मेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो तब तक जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है. घर में पेरेंट्स अगर दोनों को इक्वल ट्रीट करना शुरू करें, डॉटर को और सन को, बेटे को आप घर का काम सिखाओ, खाना भी सिखाओ, लड़की को बाहर का एक्सपोजर भी दो, दोनों को इक्वल लेवल पे काम आएगा, तभी आगे उनके काम चलेंगे. सो जेंडर इक्वालिटी में तो मेल फीमेल दोनों की पार्टिसिपेशन जरूरी है. थैंक यू मैम. मैम जैसे भी आपने बात की जेंडर रोल्स की, तो वी आर सीइंग मेजर शिफ्ट्स इन दिस जेंडर रोल्स दीस डेज, एज गर्ल्स आर परफॉर्मिंग बॉयज ड्यूटीज एंड बॉयज आर परफॉर्मिंग गर्ल्स ड्यूटी. इज दिस शिफ्ट बेनिफिशियल फॉर ऑल genders, मैम? Pardon? Is this shift is beneficial for all genders? Definitely. You know, I share with boys also कि कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है, we are doing something wrong with males also. Yes. Because we make stereotypes for them also. हम बोलते हैं कि boys can't cry, boys don't cry. तो कहीं ना कहीं हम उनको इमोशन शो करने का मौका ही नहीं दे रहे. हम उनको बोलते हैं कि बॉयज डोंट क्राई. इसीलिए मेल्स में जो प्रॉब्लम्स है ना, लाइक बीपी, हार्ट अटैक, वो ज्यादा है फीमेल से, क्योंकि हमने उनके लिए भी स्टीरियोटाइप डेवलप कर दिए. तो इसीलिए अगर देखो, जैसे मैम बोल रहे थे कि द्वाबा तो काफी देर से बाहर जा रहा है कनाडा में, तो वहां तो कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती, एंड वी डोंट अलाउ आवर बॉयज टू इवन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर देमसेल्व्स. तो कहीं ना कहीं वहां जाकर उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमने उनको कुछ सिखाया ही नहीं कि ये तो गर्ल्स के काम है. तो बॉयज के साथ भी हम लोग उतना ही प्रॉब्लमेटिक चीज क्रिएट कर रहे हैं जितना गर्ल्स के साथ. हर एक को इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने लिए, चाहे वो बॉयज हैं चाहे वो गर्ल्स हैं. थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे हमारा कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है मैम, and please tell us one thing we can do to make a positive impact on gender equality in our institution. That is what I was sharing with the girls. Na? They should be aware of their legal rights, their social rights. And when these girls, before reaching the institute, they are traveling either by their own vehicles or through public transport. हर जगह जेंडर इश्यूज हैं, हर जगह आपको हरासमेंट होगी, हर जगह ईव टीजिंग है. आज की डेट में भी हम लोग जितना मर्जी सोचें, कोई आपके साथ बस में बैठा होगा, वो जरूर कूनी से आपको ट्राई करेगा कि टच करने की, या कोई कमेंटिंग करने की, या कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने की. सो ये सब डील करने के लिए गर्ल्स को खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा. आप ये ना सोचो कि फिजिकली मैं वीक हूं दूसरों से, यू आर इक्वली स्ट्रांग. और जब भी कोई क्राइसिस आता है ना, तो फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती है, उस टाइम मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है. मेंटल स्ट्रेंथ से ये हौसले की उड़ान जो है ना, ये काम आती है उस टाइम. सो आई थिंक कि इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ का इतना रोल नहीं है जितना मेंटल स्ट्रेंथ का है.
Thank you, ma'am. That's all about the question answer session. Thank you so much, ma'am, for answering all the questions and creating a wonderful platform for intellectual ये exchange. कुछ बच्चे तो नहीं पूछ रहे चैटिंग में, कौन पूछ रहा है? Did you go through these questions? In chatting also there are certain. There are comments, ma'am, कि आपने बहुत अच्छा बोला. Okay, done. ठीक है. So I thought somebody is asking some question. ठीक है. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Now I would like to request our IQSC coordinator, Dr. Anupam Sabharwal, to present her vote of thanks to our today's resource person, Madam Dr. Anupam Sabharwal. Thank you, ma'am, Varinder. Thank you so much for giving me an opportunity to pay my regards to such a mesmerizing and enlightened personality, Dr. Ritu Lahalji. I am very thankful to you, ma'am, for sharing your views on gender sensitization and sexual harassment with facts. Indeed, we all think that today has been a great day to remember and cherish for us, because we have gained a lot about gender sensitization. Ma'am, truly, when we have been writing the AQR of NAC, that is Annual Quality Assurance Report, there has been a constant thought in our mind that being a girls' college, there is not a dire need of gender sensitization for us. But after listening to you, ma'am, this misconception has been removed from our mind. I'm sure that today everyone has learned about the real concept of gender sensitization and its validity for all of us. Yes, ma'am, today I also realize that now why Madam Principal has been recommending your name for such a sensitive yet significant issue. Now, your views reflect your erudition and a wide experience. Thank you very much, ma'am, for gracing today's webinar, and I hope we will keep in touch in future too. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot, ma'am. So thank you very much to everyone for listening me so patiently. And thanks to Dr. Archana Garg particularly, and Varinder ji and the whole faculty member. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. For with this, we reach to end of today's great session. On behalf of Hindu Kanya College, Kapurthala, I am thankful to each and everyone who graced this session. Once again, I thank you all for joining us today. Have a great day ahead. Thank you.